I got 82. Content 90 out of 90. Pronunciation 90 out of 71. Fluency 90 out of 85. हेलो स्टूडेंट्स, काफ़ी ज़्यादा बच्चों को रीटा लेक्चर के अंदर प्रॉब्लम होती है। उनको यही नहीं पता होता है कि हमें किस तरीके से बोलना है, कैसे कीवर्ड्स नोट करने हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि किस स्पीड से आपको बोलना है, कौन सा टेम्पलेट आपको यूज़ करना है। तो वीडियो को फुल एंड तक देखना। चलिए तो हम कोई सा भी रीटा लेक्चर कर लेते हैं। टेम्पलेट ज़्यादा मैटर नहीं करता। टेम्पलेट आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैं अपना टेम्पलेट भी बोल कर दिखाऊंगा। तो हम अपने टेम्पलेट की बात कर लेते हैं। द स्पीकर प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट टॉपिक। फर्स्टली ही टोल्ड अबाउट, देन ही टोल्ड अबाउट, एंड ही टोल्ड अबाउट, देन ही टोल्ड अबाउट, फाइनली ही फोकस्ड ऑन। So this lecture is very informative for me. The major currency of our reward system is dopamine, an important chemical or neurotransmitter. There are many dopamine receptors in the forebrain, but they're not evenly distributed. Certain areas contain dense clusters of receptors, and these dopamine hotspots are a part of our reward system. Drugs like alcohol, nicotine, or heroin send dopamine into overdrive, leading some people to constantly seek that high. In other words, to be addicted. Sugar also causes dopamine to be released, though not as violently as drugs. And sugar is rare among dopamine-inducing foods. Broccoli, for example, has no effect, which probably explains why it's so hard to get kids to eat their veggies. Speaking of healthy foods, let's say you're hungry and decide to eat a balanced meal. You do, and dopamine levels spike in the reward system hotspots. But if you eat that same dish many days in a row, dopamine levels will spike less and less, eventually leveling out. That's because when it comes to food, the brain evolved to pay special attention to. मैं आपको अपने टेम्पलेट से बोलकर दिखाऊंगा, तो आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आपको पूरा 40 सेकंड्स तक ही बोलना है। 20 या 25 सेकंड्स में आपको कंप्लीट करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। तो स्टार्ट करते हैं। The speaker provides important information about reward. Firstly, he told about important chemicals and receptors, and he told about hotspots, drugs and alcohol, and he told about sugar and foods. Then he told about effects and speaking. Finally, he focused on healthy foods, same dish and attention. So this lecture is very informative for me. देखो, 1 सेकंड का भी आपको गैप नहीं देना है। जैसे ही कंप्लीट किया, स्टॉप। स्कोर चेक करके देखते हैं। I got 82. Content 90 out of 90. Pronunciation 90 out of 71. Fluency 90 out of 85. Next करते हैं। While a written word might have multiple definitions, we can usually determine its intended meaning through context. In speech, however, a word can take on additional layers of meaning. Tone of voice, the relationship between speakers, and expectations of where a conversation will go can imbue even words that seem like filler with vital information. This is where and come in, or and m, tuota and eto and ano. Linguists call these filled pauses, which are a kind of hesitation phenomenon. And these seemingly insignificant interruptions are actually quite meaningful in spoken communication. For example, while a silent pause might be interpreted as a sign for others to start speaking, a filled pause can signal that you're not finished yet. Hesitation phenomena can buy time for your speech to catch up with your thoughts. Or तो आपको ध्यान देना है। मैं आपको बोलकर भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इनके हम पेयर बना लेते हैं। आपको पेयर्स बनाने हैं 2 या 3 कीवर्ड्स के। तो स्टार्ट करते हैं। 10 सेकंड्स है आपके पास प्रिपेयर करने के लिए। क्लिक टू स्टार्ट। द स्पीकर प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट डेफिनेशन, देन ही start. Click to start.
The speaker provides important information about definition. Firstly, he told about meanings and layers. Then he told about voice relationship and conversation. And he told about vital information and field poses. And he told about hesitation and phenomenon. Finally, he focused on spoken communication, signal and furtherance. So this lecture is very informative for me. देखो मैंने इसके अंदर फम्बलिंग भी की, बट रुका नहीं, क्योंकि आपको रुकोगे तो कंप्यूटर को गलती पता लग जाएगी। आपको कंप्यूटर को ऐसे नहीं देना है कि कंप्यूटर गलती समझ पाए। देखो मैंने इसके अंदर बहुत सा कंटेंट गलत भी बोला, फिर भी कंटेंट 90 आउट ऑफ 90, प्रोनाउंसिएशन 61, फ्लुएंसी 72। इसके अंदर आपको ज़्यादा कंटेंट पर फोकस नहीं रखना, प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी पर आपको फोकस रखना है। तो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपको रिटेल लेक्चर को बोलना है। तो इस तरीके से आपको रिटेल लेक्चर को करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।